Hello viewers, how are you all? I am Dr. Asif and today I am going to talk about Wegovy. So viewers, the FDA has approved new drug treatment for chronic weight management and their drug is called simaglutide. Okay, so the US Food and Drug Administration approved Wegovy semaglutide injection 2.4 milligram once weekly for chronic weight management in adults with obesity or overweight with at least one weight-related condition such as high blood pressure, type 2 diabetes, or high cholesterol for use in addition to a reduced calorie diet and increased physical activity. So basically, this once weekly dose injection 2.4 milligram once weekly is basically approved for chronic weight management in those adults who have obesity, okay, but with at least one weight related condition like high blood pressure, type 2 diabetes, high cholesterol, okay. So this under the skin injection is the first approved drug for chronic weight management in adults with general obesity, okay, or overweight since 2014. So this is basically approved for chronic weight management uh, in adults with general obesity or overweight, okay. The drug is indicated for chronic weight management in patients with a body mass index BMI of 27 kg per meter square or greater who have at least one weight related ailment or in patients with a BMI of 30 kg per meter square or greater. So this drug is indicated for chronic weight management in those patients, okay, who have BMI of 27 kg per meter square or greater than that, okay, and who have weight at least one weight related ailment like high blood pressure, high cholesterol, type 2 diabetes, okay, and this is also indicated in those patients who have a BMI of 30 kg per meter square, okay. Now coming towards what is BMI. So these are some values in the table. So below 18.5 it will be considered underweight, 18.5 to 24.9 it will be considered normal weight, okay. Similarly 25.0 to 29.9 it will be considered overweight, and obesity class 1 the value will be 30.0 to 34.9, okay, and similarly obesity class 2, obesity class 3. So how to calculate BMI? So the formula of BMI is equal to weight divided by height square, which is in meter, okay. So suppose the person height is 152 centimeters. So if we convert 152 centimeters to meters, so this will be equal to 1.52 meters, okay. So by taking square of 1.52 meters, then it will be equal to 2.31 meter square. And suppose the weight of that person is 60 kgs. So if we put these values in formula, so it will be equal to 25.96, okay. So 25.96 value it will be considered as overweight, okay. So now coming towards why obesity is dangerous. So having obesity or overweight is a serious health issue
associated with some leading causes of death, included heart diseases, stroke, and diabetes, and is linked to an increased risk of certain types of cancer. So that's why obesity is dangerous. Okay, losing up 5% to 10% of body weight through diet and exercise has been associated with a reduced risk of cardiovascular disease in adult patients with obesity or overweight. Okay, now coming towards that how semaglutide works in our body. So Wegovy works by mimicking a hormone called glucagon like peptide 1, GLP-1. Okay, and the function of that hormone is to target areas of the brain that regulate appetite and food intake. Okay, the medication dose must be increased gradually over 40 to 20 weeks, over 16 to 20 weeks to 2.4 milligram once weekly to reduce gastrointestinal side effects. Okay, so this drug have some side effects basically, so that's why. So this is how semaglutide works. So semaglutide basically works on a hormone GLP-1, which is glucagon like peptide 1, and the function of that hormone is to target areas of the brain that regulate appetite and food intake. Okay, so now coming towards what are the side effects of this drug. So the side effect is number one, diarrhea. Okay, headache. These are some common side effects. Okay, constipation, abdominal pain, vomiting, fatigue, dizziness. Okay, so this was all about semaglutide. So if you have any question relating to this drug, so you can ask in the comment section. Okay, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आज मैं बात करूंगा वेगोवी इंजेक्शन के बारे में। तो ये जो वेगोवी इंजेक्शन है, इसमें जो ड्रग है वो है सीमाग्लूटाइड, और ये जो यूएस का इदारा है एफडीए, तो इस इदारे ने ये ड्रग अप्रूव किया है 4 जून 2021 को। और किस मकसद के लिए अप्रूव किया है? वजन को कम करने के लिए ये ड्रग अप्रूव किया है, और ये इन लोगों में इस्तेमाल किया जाता है जिन लोगों का वजन ज्यादा हो, साथ में हाई ब्लड प्रेशर हो, या शुगर के मरीज हो, या उन लोगों का कोलेस्ट्रॉल लेवल ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कुछ कंडीशंस है, और ये जो ड्रग है तो ये जनरल ओबेसिटी में भी इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा, इसके अलावा जिन लोगों का बीएमआई, जिसको कहते हैं बॉडी मास इंडेक्स, ये 27 हो, 27 केजी पर मीटर स्क्वायर या इससे ज्यादा हो, या उन लोगों में जिसमें वन वेट रिलेटेड एलिमेंट हो, मतलब या हाई ब्लड प्रेशर हो, या शुगर हो, या कोलेस्ट्रॉल हाई हो। ठीक है, या उन पेशेंट्स में जिनका बीएमआई ये 30 केजी पर मीटर स्क्वायर हो या इससे ज्यादा हो। ठीक है, तो अब बीएमआई ये क्या है? तो बीएमआई जिन लोगों का 18.5 से बीएमआई कम हो तो ये अंडरवेट इसको कहते हैं। ठीक है, जिन लोगों का 18.5 से 24.9 तक हो तो ये वो लोग हैं जिनका वेट बिल्कुल नॉर्मल हो। ठीक है, जिन लोगों का वेट ज्यादा हो, ओवर वेट जिसे कहते हैं, तो वो 25 से लेके 29.9 यहां तक। ठीक है, तो इसको ये कुछ बीएमआई वैल्यूज है, और जो ओबेसिटी क्लास 1 है जिसको मोटापा कहते हैं, तो वो 30.0 से लेके 34.9 तक होता है। ठीक है, तो अब ये जो बीएमआई है तो ये हम किस तरह अपने आप के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक मिसाल है कि एक बंदा है
सपोज उनका हाइट जो है वो 152 सेंटीमीटर है, तो ये अगर हम मीटर में कन्वर्ट करें तो ये 1.52 मीटर इससे बन जाते हैं। तो हम इसका हम इसका स्क्वायर अगर ले ले तो ये 2.31 मीटर स्क्वायर ये बन जाते हैं, ठीक है। और सपोज उस बंदे का जो वजन है तो वो 60 किलोग्राम है, तो जो बीएमआई का फार्मूला है तो वो है वेट डिवाइडेड बाय हाइट स्क्वायर, ठीक है। तो अगर हम ये वैल्यू उस फार्मूले में पुट करें तो इससे जो बन जाएगा तो वो 25.96, ठीक है। तो 25.96 का मतलब है कि इस बंदे का जो वेट है तो ये ओवर वेट है, ठीक है, क्योंकि ओवर वेट का जो बीएमआई वैल्यू है ना तो वो है 25.0 से लेके 29.9 तक है, ठीक है। अब ये जो ओबेसिटी है, जो मोटापा है, तो ये क्यों खतरनाक है? तो ये इस वजह से खतरनाक है कि जिन जिन लोगों का वजन ज्यादा है और वो बहुत हेवी वेट है उनका, और तो उन लोगों में दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, शुगर की बीमारियां और कैंसर के कुछ अकसाम है, तो इस तरह की बीमारियों का खतरा ज्यादा होता है, ठीक है। इसके अलावा अब ये जो सीमाग्लूटाइड ड्रग है तो ये किस तरह काम करता है बॉडी में? तो ये हमारे बॉडी में एक हार्मोन है GLP-1, ठीक है। तो ये उस हार्मोन पे ये एक्शन करता है, ठीक है। और उस हार्मोन का क्या काम है बेसिकली? तो वो हमारे दिमाग में मुख्तलिफ एरियाज को टारगेट करता है, जिन एरियाज का भूख को कंट्रोल करना और फूड इनटेक को कंट्रोल करना, ठीक है। तो इस तरह ये इसका मैकेनिज्म है। अब इसके जो मुज़िर असरात है, साइड इफेक्ट्स है, तो इसमें डायरिया है, ठीक है, हेडेक, सर का दर्द, इसके अलावा कंस्टिपेशन, एब्डामिनल पेन, मैदे पे दर्द हो, ठीक है, उल्टिया, वोमिटिंग, इसके अलावा फटीग, थकावट, डिजीनेस, ठीक है, जिसको हम कहते हैं ऊंग आना। तो ये इसके कुछ कॉमन साइड इफेक्ट्स है, लेकिन ये बहुत ज्यादा बेस्ट ड्रग है वेट मैनेजमेंट के लिए। और बेसिकली ये ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल करता है और इंसुलिन सिक्रीशन को ये बढ़ाता है, ठीक है। तो वेट मैनेजमेंट में ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। तो ये थी आज की वीडियो। अगर इससे रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। शुक्रिया।